everyone. Welcome to all in the series of real analysis. आज हम स्टार्ट करेंगे रीमन इंटीग्रल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। Let f is a function from closed interval ab to R, which is bounded. Now let us consider a partition of closed interval AB, that is g is equals to xi such that I equals to 0, 1, k such that a equals to x0, x1 is greater than x0, x2 is greater than x1 and xk is equals to b. And usually इसको हम ऐसे लिखते हैं, is a partition of a b. ठीक है। And now consider the sum. Where for I equals to 1 to k, delta xi equals to xi minus 1 and small mi equals to infimum of the set fx, x is greater than equals to xi minus 1 smaller than xi. ठीक है। And capital Mi equals to supremum of the set fx such that x is greater than equal to xi minus 1 and is smaller than xi. ठीक है। और जो ये LPF एंड UPF हमने लिखे हैं, LPF को हम बोलते हैं लोअर सम एंड UPF को बोलते हैं अपर सम। वहां से यहाँ पर लिख लेते हैं LPF equals to lower sum and UPF equals to upper sum associated with PF, partition P and function F. ठीक है। सो ये सब मैं एक बारी ग्राफिकली समझा देती हूँ। सपोज ये हमारा ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ है एंड ये पॉइंट है A एंड ये है B। ठीक है। हमने AB का पार्टीशन कर लिए, सो A इक्वल्स टू x0, B इक्वल्स टू x3, x1, x2, x3
एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। तो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, सो ये पार्टीशन इक्वल लेंथ के होंगे। अब देखिए एलपीएफ क्या डिफाइन किया था, एलपीएफ लोअर सम इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई। डेल्टा एक्स आई क्या होगा, एक्स आई माइनस 1। ठीक है, और एम आई क्या होगा, इंफीमम ऑफ एफ एक्स where x is greater than equal to xi minus 1 and smaller than equal to xi। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा xi क्या हो गया, x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, एंड स्मॉल mi क्या हो गया, देखिए इस वाले x नॉट से x1 तक सबसे छोटी वैल्यू क्या है f x की, इन्फीमम क्या है, x नॉट पर है, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जो ये रेक्टेंगल बनेगा, ये वाला, इसी का तो एरिया है ये, एम आई एक्स आई माइनस 1। ठीक है, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया, एम आई एक्स आई माइनस 1। ठीक है, x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, एंड m1, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आ गया ये। ठीक है, एंड अब देखिए ऐसे ही इस वाले पोर्शन में जो x2 to x3 होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, तो ये वाला रेक्टेंगल का एरिया होगा। ठीक है, अब देखिए यूपीएफ क्या था, अपर सम समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k एम आई, सॉरी एम कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई, वेयर कैपिटल एम आई इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स such that x is greater than equal to xi minus 1 smaller than equal to xi। इसको हटा देते हैं, एक मिनट। अब देखिए x2 to x3, डेल्टा x3 क्या होगा, x2 x3 माइनस x2। ठीक है, एंड कैपिटल एम आई क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स कैपिटल M3, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स such that x is greater than equal to x2 smaller than equal to x। ठीक है, तो इसके बीच में x2 to x3 के बीच में एफ एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो होगा M3, मतलब जो उसका सुप्रीमम है एफ एक्स का, सच दैट x is greater than x2 and smaller than x3। तो सबसे जो इसका सुप्रीमम है वो ये है। तो जो ये रेक्टेंगल बनेगा, ये इसका एरिया होगा M3 x3 माइनस x2। ठीक है, तो जो लोअर सम है वो क्या है, ये छोटे वाले रेक्टेंगल्स का एरिया। ठीक है, एंड जो अपर सम है वो क्या है, बड़े वाले रेक्टेंगल्स का एरिया। समझ आ गया। अब देखिए एक रिजल्ट, सपोज ये जो एरिया है, ये वाले पोर्शन का जो एरिया है, इसको हम मान लेते हैं ए। अब देखिए ए होगा जो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा एलपीएफ के, क्योंकि एलपीएफ क्या है, छोटे वाले रेक्टेंगल्स का एरिया है, देन हम सब रेक्टेंगल्स को का सम कर दे रहे हैं। एंड जो यूपीएफ होगा वो बड़ा होगा ऐसे, बिकॉज ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया है एंड इन सब का हम सम कर दे रहे हैं इस टाइप से, इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया होगा। ठीक है,
ठीक है। तो ये हर एक पार्टीशन के लिए, जितने भी पार्टीशन हम करेंगे क्लोज इंटरवल ए बी के, उनके लिए ये चीज ट्रू होगी। तो अब इन चीज को माइंड में रखिए कि एलपीएफ क्या है एंड यूपीएफ क्या है, स्मॉल एम आई क्या है, कैपिटल एम आई क्या है। हम एक डेफिनेशन लिखते हैं रीमन इंटीग्रेबल। तो बाउंडेड फंक्शन from closed interval AB to R is said to be Riemann integrable on closed interval AB if there exists a unique gamma belongs to R such that LPF is smaller than equals to gamma and is smaller than equals to UPF for all partition P. So if such gamma exists, then it is called the Riemann integral of f, and it is denoted by fx dx। मोस्टली सब रीमान इंटीग्रल बोलते हैं इसको, बट इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो रीमन इंटीग्रल है। एवरी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी रीमन इंटीग्रल। तो एक एग्जांपल लिखिए जो रीमन इंटीग्रल नहीं है। f is a function from closed interval 0 1 to R and fx equals to 0 when x belongs to Q, यानी x is rational, and 1 when x is irrational। ठीक है, इस फंक्शन को हम डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी पार्टीशन ले लें हम 0 1 का। सपोज P is a partition of closed interval 0 to 1। कोई भी पार्टीशन ले लेंगे तो देन जो स्मॉल एम आई होगा, यानी जो इन्फीमम होगा ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आई माइनस 1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स आई, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। बिकॉज कोई भी दो नंबर लेंगे उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी पार्टीशन लेंगे उसमें रैशनल नंबर्स तो जरूर होंगे। तो एक्स आई एंड एक्स आई माइनस 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स होंगे, 0 तो जरूर आएगा। तो इसलिए हर एक एम आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो एलपीएफ हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा, एंड जो कैपिटल एम आई है वो हर एक के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स आई माइनस 1 एंड एक्स आई के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स लाई करेंगे, तो एम आई की कैपिटल एम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एंड यूपीएफ क्या हो जाएगा इस तरीके से, देखिए x2 माइनस x1 प्लस x3
3 माइनस x2 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बचेगा, xk माइनस xk माइनस 1। तो ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये सब टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा क्या, xk माइनस x1 एंड xk क्या है 1 और x1 क्या है, सॉरी यहाँ पर आएगा x1 माइनस x0। ठीक है, तो x1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा xk माइनस x0 एंड x0 क्या है 0, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यूपीएफ क्या आ गया 1। सो एलपीएफ एंड यूपीएफ के बीच में बहुत सारे अल्फा आ जाएंगे। ठीक है, एवरी अल्फा बिटवीन 0 to 1, ये चीज सेटिस्फाई करेगा। और हम बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रीमन इंटीग्रल दिस अल्फा शुड बी यूनिक, हेंस एफ इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल। ठीक है, अब देखिए एक रिजल्ट फाइंड करते हैं। Let f is a function from closed interval ab to r and let p be the partition of ab then it is clear that LPF is smaller than UPF. ठीक है, for all partition P and let set of all partition। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे for all P belongs to P। ठीक है, now denote small m equals to infimum of fx where x is greater than equal to a and smaller than equal to b। That means m infimum है fx का over all domain। ठीक है, and capital M supremum of fx such that x is greater than equal to a and smaller than equal to b। So for any partition P xi such that I is equals to 0, 1 to k, जो LPF है वो क्या होगा, डेल्टा xi स्मॉल mi। अब देखिए जो m है, अगर हम mi की जगह m रखते तो इट इज क्लियर दैट ये LPF की जो वैल्यू है ये बड़ी हो जाएगी अगर हम mi को m से रिप्लेस कर दें। ठीक है, बिकॉज m क्या है, इनफीमम है ओवर ऑल डोमेन एंड mi क्या है, इनफीमम है बिटवीन xi एंड xi माइनस 1। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा स्मॉल m v माइनस e। ठीक है, एंड सिमिलरली जो यूपीएफ है उसमें कैपिटल mi को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल m से, देन ये छोटा हो जाएगा डेल्टा xi कैपिटल M एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल M p माइनस ए। तो इससे हमें क्या मिला, जो LPF है UPF से छोटा होगा एंड LPF से छोटा क्या होगा, स्मॉल m p माइनस ए एंड UPF से बड़ा होगा कैपिटल M p माइनस ए। ठीक है, thus
the set LPF such that P belongs to P for all partition P is bounded above by M B minus A, and the set UPF for all partition P, ठीक है, ये बाउंडेड बिलो हो जाएगा बाय स्मॉल m p माइनस a, is bounded below by the small m p minus a. Fine. Then LF क्या हो जाएगा? LF को हम लिखते हैं सुप्रीमम ऑफ LPF, P belongs to P. जितने भी पार्टीशंस हैं उन सबको ले लेते हैं और उनमें से जब LPF निकालेंगे और जो सुप्रीमम होगा उनका, उसको हम बोल देते हैं LF, एंड UF इक्वल्स टू इंफीमम ऑफ UPF where P is a partition. ठीक है, ये एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज LPF जो है, ये जो सेट है LPF का फॉर पार्टीशन P ये बाउंडेड अबव है, एंड जो सेट है UPF फॉर पार्टीशन P वो बाउंडेड बिलो है. सो ये चीज एग्जिस्ट करेगी, LF एग्जिस्ट करेगा एंड UF एग्जिस्ट करेगा. तो अब एक थ्योरम लिख लीजिए. A bounded function f from closed interval AB to R is Riemann integrable if and only if LF equals to UF. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए. Let f is a function from closed interval AB to R be a bounded function then f is Riemann integrable if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a partition P of AB such that UPF minus LPF is smaller than epsilon. So proof लिखिए. Suppose f is Riemann integrable and let epsilon is greater than 0 be given, then by definition of LF and UF there exists a partition P1 and P2 there exist partitions, दो partitions लिए हमने P1 and P2 of AB such that
LF minus epsilon by 2 LP1F and UP2F is smaller than UF plus epsilon by 2. ठीक है, बिकॉज UF क्या है, UF एंड LF क्या थे, LF था सुप्रीमम ऑफ LPF where P is the partition and UF था infimum of UPF F where P belongs to the set of partition. So ये हमारे पास ये दो चीजें आ गई. अब देखिए, let P equals to P1 union P2. The partition obtained by combining P1 and P2. Then जो LF होगा minus epsilon by 2 LP1F इससे बड़ा होगा एंड LP1F से बड़ा हो जाएगा LPF because P1 union P2 is superset of P1. ठीक है, एंड UPF सिमिलरली ऐसे UPF के साथ हो जाएगा P2F plus epsilon by 2. ठीक है, now since LF is equals to UF by previous theorem कि अगर F Riemann इंटीग्रेबल है then LF equals to UF होगा. then तो इस इक्वेशन से देखिए क्या आएगा, UPF minus LPF is smaller than UF plus epsilon by 2 minus LF minus epsilon by 2. ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गया, UF equals to LF है एंड epsilon by 2 plus epsilon by 2 क्या आ गया, epsilon. ठीक है, UF से LF कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये दोनों इक्वल है. ठीक है, एक साइड प्रूव हो गई कि अगर F Riemann इंटीग्रेबल है देन UPF minus LPF is smaller than epsilon. ठीक है, अब दूसरी साइड प्रूव करते हैं. So conversely, suppose that for all epsilon greater than 0, there exists a partition P of AB such that UPF minus LPF is smaller than epsilon. Now, since LPF is smaller than equal to LF and UF is greater than equal to LF and UF is smaller than equal to UPF. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, UF minus LF is smaller than equal to UPF minus LPF and it is smaller than epsilon. So UF minus LF is smaller than epsilon and epsilon is arbitrary. It is true for every epsilon greater than 0. Hence, LF is equals to UF and hence
f is Riemann integrable. फाइन. एल एफ की एंड जो यू एफ है उसकी नोटेशन ऐसे भी है कि जो एल एफ है उसको हम ऐसे लिखते हैं एंड यू एफ को ऐसे लिखते हैं. ठीक है. So if we have to show a function to be Riemann integrable, then we have to show that this is equals to LF equals to UF. ठीक है. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Show that a constant function fx equals to c for all x belongs to closed interval ab is Riemann integrable and integral a to b fx. That means Riemann integrable की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? c b minus a. So let's solve. हमें क्या गिवन है कि fx equals to c for all x belongs to closed interval ab. Let p be the partition. X naught equals to a, x1, xn equals to b. So your partition of closed interval a to b, then LPF क्या होगा देखिए. जो mi है mi equals to c for all I from 1 to n because f is a constant function and mi is the supremum. mi को क्या डिफाइन करते थे? infimum of fx where x is greater than equal to xi minus 1 and smaller than equal to xi. ठीक है. सो ये mi हर एक i के लिए क्या हो जाएगा? c. सो इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 to n c डेल्टा xi इक्वल्स टू c समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi minus 1 एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? c xn minus x naught equals to c x b minus a. फाइन. सिमिलरली UPF क्या आएगा? कैपिटल MI डेल्टा XI and capital MI is also equals to C for all I equals to C. ये भी सेम ऐसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? B minus A. फाइन. thus जो LF होगा ये किसके इक्वल होता है? सुप्रीमम ऑफ LPF where P is partition of AB, partition of closed interval A to B. तो LPF हर एक पार्टीशन के लिए चाहे कोई भी पार्टीशन ले ले जो LPF होगा वो C B minus A ही होगा. तो इसको क्या लिख देंगे? C
बी माइनस ए। सिमिलरली जो यू एफ होगा वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, सी बी माइनस ए। ठीक है, therefore LF UF equals to LF, and hence constant function is Riemann integrable. ठीक है, and value of Riemann integral of fx is c b minus a. फाइन, एक और रिजल्ट लिखिए। हमने देखा कि जो यूपीएफ है वो स्मॉलर देन होगा यूएफ, यानी ऐसे डिनोट करते हैं हम यूएफ को प्लस एप्सिलॉन के। ठीक है, एंड एलपीएफ इज ग्रेटर देन एलएफ प्लस माइनस एप्सिलॉन, बिकॉज जो एलएफ है वो क्या डिफाइन हो रहा था, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ जहाँ पे पार्टीशंस थे। ठीक है, एंड ऐसे ही जो यूपीएफ था वो कैसे डिफाइन हो रहा था, ये क्या था यूएफ, ये कैसे डिफाइन कर रहे थे हम लोग, infimum of UPF where P is the partition of AB of AB. Similarly, LF कैसे डिफाइन कर रहे थे, supremum of LPF P is partition of AB of A. ठीक है, so then ये जो LPF है किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट LPF नॉर्म P टेंड्स टू 0, जहाँ नॉर्म P क्या है, the width of the longest sub interval, width of longest sub interval, that is maximum of ठीक है, where P is partition of T0 T1 up to Tk. ठीक है, and similarly UF किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट नॉर्म ऑफ P टेंड्स टू 0 UPF। ठीक है, नाउ एक थ्योरम लिखिए, let f be a continuous function then f is Riemann integrable. प्रूफ लिखते हैं इसका, so let f is a continuous over closed interval AB, let f is continuous over
closed interval AB, then f is bounded and uniformly continuous over closed interval AB. एंड कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे किसी क्लोज इंटरवल पर, सो वो फंक्शन जो है बाउंडेड होगा, ठीक है. द फंक्शन विल ऑलवेज बाउंडेड एंड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है. सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 be given, then let P be the partition ठीक है. P पार्टीशन है ए बी का, क्लोज इंटरवल ए बी का, so that AB divide into a finite number of sub interval, so that close interval AB divide into a finite number of sub interval. X0, X1, close interval X1, X2, close interval X2 to X3 and so on, ठीक है. Such that the oscillation of f in each of these subinterval is less than epsilon by p minus a. So because of uniform continuity of f. Oscillation of f means the difference between the supremum and the infimum of the function, ठीक है. That is, if mi and small mi are bounds of f in xi minus 1 to xi, that means mi is the infimum and capital Mi is the supremum of f in that interval xi minus 1 xi, then mi minus small mi is smaller than epsilon upon p minus a, where I equals to 1 to n. Now UPF minus LPF is equals to I equals to 1 to n capital Mi minus small mi xi minus 1, ठीक है, यही होगा. So it is smaller than, ये वाला जो हमने लिखा कैपिटल Mi माइनस Mi इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन अपॉन B माइनस A, इससे इस Mi माइनस Mi को रिप्लेस कर देते हैं. तो समेशन I इक्वल्स टू 1 to n एप्सिलॉन अपॉन P माइनस A xi माइनस 1, ठीक है. तो किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन P माइनस A समेशन I इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस 1, ठीक है. ये इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन B माइनस A P माइनस A. इट इज
equal to the length of the interval. ठीक है, so therefore UPF minus LPF ये किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन बचेगा, सो UPF माइनस LPF इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन. ठीक है, एंड हेंस f is Riemann integrable over AB, and hence f is Riemann integrable of over AB, close interval AB, close interval AB. Thus every continuous function is Riemann integrable. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए. Let f be a monotonic function over close interval AB, then f is Riemann integrable over close interval AB. Now, since every monotonic function which is defined over close interval AB is continuous. ठीक है, कोई भी फंक्शन है जो मोनोटॉनिक है या तो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा एंड वो डिफाइन है क्लोज इंटरवल AB पर, then it will be continuous. And if it is continuous, then it follows from the previous theorem that it is Riemann integrable over closed interval AB. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए. A bounded function f which has only finite number of points of discontinuity over closed interval AB is Riemann integrable over closed interval AB. नेक्स्ट थ्योरम लिखिए. Let the function f is bounded over close interval AB and the set of points of discontinuity has a finite number of limit points. Then f is Riemann integrable over closed interval AB. ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं. Let f with a function
defined on closed interval 0 to 3 by fx equals to greatest integer of x. ठीक है, then show that f is integrable on closed interval 0 to 3 and integral of fx over 0 to 3 is equals to 3. ठीक है, हमें क्या गिवन है, fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि ये रिमेन इंटीग्रेबल है ओवर क्लोज इंटरवल 0 to 3. तो किस तरीके से डिफाइन होगा, when x is greater than equal to 0 and smaller than 1, then fx is equals to 0. And when x is greater than equal to 1 smaller than 2, then fx is equals to 1. And when x is greater than equal to 2 smaller than 3, then fx equals to 2. And when x equals to 3, then fx equals to 3. ठीक, ये तो क्लियर है कि ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड है. इट इज बाउंडेड बाय 0 and 3. जो लोअर बाउंड है इसका वो है 0 एंड अपर बाउंड है इसका 3. ठीक है, एंड इट इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट 1, 2 and 3. इसका ग्राफ देखिए एक बार, 0, 1, 2, 3. 0 से 1 के बीच में क्या है, 0. ठीक है, देन एंड 3 पर ये 3 वैल्यू दे रहे हैं. ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, एक तो इस पॉइंट पर यानी 1 पर, एक ये 2 पर डिसकंटिन्यूअस है एंड 3 पर डिसकंटिन्यूअस है. So by previous theorem, the function is bounded and discontinuous at finite point. So the function f is integrable on closed interval 0 to 3. Therefore, the function f is Riemann integrable closed interval 0 to 3. अब इसका इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं. क्लोज इंटरवल 0 to 3 पर हमें फाइंड करना है. सो एफ डी एक्स इक्वल्स टू 0 to 3 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स. इट इज इक्वल्स टू 0 to 1 एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एक्स डी एक्स प्लस 2 to 3. अब देखिए 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 एंड ओवर 1 to 2 1 एंड 2 to 3 क्या वैल्यू थी 2. तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 0 प्लस x 0 to 1 प्लस 2x 2 to 3 इक्वल्स टू 1 minus 0 प्लस 2 into 3 minus 2 into 2. 1 plus 6 minus 4. 1 plus 2 equals to 3. ठीक है. सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे. थैंक यू.